YouTube. Okay, I think we can begin now. So I would request everybody to please put their mics on mute so that we can go on with the program without any hindrance. So ma'am, we can start. Fine. आदरणीय शक्तियों, प्यारे मित्रगणों, सहकर्मियों एवं यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों, 8 मार्च की जो ये सुबह है काफी उमंग, उत्सव और उत्साह से भरी हुई है। जोश में मैं देख रही हूँ महिलाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। आशावादियों और अभिलाषियों का ये जोश केवल एक दिन का ना रह जाए, हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है मानवता का, जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। आज इस संकल्प के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, समान अधिकार और सम्मान एक स्वस्थ समाज की नींव है। इसी उद्देश्य के साथ विश्व भर में महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। आज इस मंच के जरिए मैं अपने देश की हर एक आम महिला को भी याद करना चाहती हूँ, जिसको यह अवसर तो नहीं मिल पाता कि वो ऐसे किसी मंच पर अपने विचारों को व्यक्त कर सके, लेकिन सबने ही अपने जीवन में चुनौतियों को तो देखा है और उन चुनौतियों को समाधानों में भी बदला है। सबने कभी जीत हासिल की है तो कभी हार का सामना किया है। और इसी के साथ मुझे कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की जो कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। आज उस आम महिला को याद करने की बारी है और आज उसी आम महिला की मुस्कुराने की भी बारी है। मैं उन सभी शक्तियों को उनके संघर्ष और यात्रा के लिए अपने हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मेरे बहुत से मित्र मुझसे कहते हैं कि क्यों महिला को बहुत से विशेषण दिए जाते हैं, जैसे कि एक अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, या फिर वो एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य है जो आपके काम या रिश्तों से जानी जाती है। मैंने इस पे काफी अध्ययन किया और एक ऋग्वेद का मेरे को एक संस्कृत का श्लोक मिला जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्लोक इस प्रकार है: अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेश शरीरजम एकस्थम तद्भु नारी व्याप्त लोक त्रयं त्विषा। अर्थात सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और तीनों लोकों में व्याप्त वह अतुल्य तेज जब एकत्रित हुआ तब वह नारी बना। आज की नारी इसीलिए तो मल्टीटास्किंग है क्योंकि उसमें यह शक्ति जो सारे देवताओं से उसको तेज मिला है, उसमें ऑलरेडी मौजूद है, अपने आप में पहले से ही मौजूद है। और यही तो एक ऐसी विशेषता है जो उसे सबसे अलग बनाती है। और यह तो उल्टा खुश होने की बात है। हम लोग इतने कार्यकुशल है, इतनी कार्यकुशलता हम में पहले से ही है, जो कि पहले से ही हमको यह वरदान मिला हुआ है। अंत में तो मैं यही कहूंगी कि हम अपने आप में एक शक्ति हैं। जरूरत है तो बस हमें इस दैवीय शक्ति को पहचानने की और निरंतर उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने की। So, ladies and gentlemen, thank you for this patient hearing, and I think I should close my my remarks here. And now I would like to request Nimla ma'am, she's the evergreen personality here, regional head in NR, to say a few words. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you very much, Manisha. Everything was so beautifully said. And thank you so much for that beautiful, setting the tone for the discussion for today. And I would like to welcome the speaker for the day, Ms Gargi Singhi, Head of Operations, Reverse Factor. She will be talking on mental and physical well-being of women. And I would also like to welcome all my colleagues from FIEO and all the participants who have joined us here. Thank you very much. And I will not say much because, Manisha has said everything, and I think we are all waiting for Ms. Gargi to share, what she has for us today. So I will just go through a few lines which I, read in the paper today. Today being Women's Day, a lot of write-ups we have seen in the morning in the paper, on the net, everywhere. So this is a, 2 lines that actually caught my attention was: do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. So
let us all, work towards this. Let us not, try to imitate anybody, but let us make our own path and leave a trail. So with these words, I would like to request Manisha to please call upon Ms. Gargi to start her session. Thank you so much. Thank you, Nimla ma'am. So considering the importance of health in today's world, and especially for women, this session has been organized, as it is rightly said by Nimla ma'am also. So I take this opportunity to welcome Ms. Gargi Singhi. She's the head of operations at Reverse Factor. Reverse Factor, share with you the profile of the Reverse Factor, it is into the field of nutrigenomics, where they help people reverse lifestyle issues like diabetes, fatty liver, cancer, and many more with the help of nutrition and power of mind. So today, Ms. Singhi is going to share her experience and learnings from helping more than 4,000 patients to be healthy and disease-free. Ms. Gargi, over to you now. Thank you. Thank you so much, Manisha ji. Before I begin, I would like to say Happy Women's Day to so many of you who are present here. It's an amazing feeling to see so many women working in power position and taking it ahead. And you, whatever you said, Manisha, that was absolutely beautiful. So I'm sure that's an inspiration to each one of us to start the day. And before I begin, there are a couple of things I would like to share. We have a lot of information out there in the internet, where they constantly tell us, do this, do that. So this session is not going to be one of them, okay? I'm going to share my experience of helping patients where they have reversed their lifestyle issues completely, from medicines to no medicines, okay? And whatever questions you have, please feel free to put it in the chat box. I'm going to take the questions as we go ahead, all right? I hope this is, and I'm audible, right, Manisha ji? Are you sharing the screen? Your screen is not visible. Yeah, I'll just be sharing. Am my voice okay? My voice is okay? Yes. Perfect. Your voice is fine. Yeah. Okay, so I'm just going to share the screen now. Are you all able to see this? Yes, we are able to see. Perfect. So today we are going to discuss the secrets of reversing diseases and building immunity. When I say diseases, I mean the lifestyle diseases that we constantly face. Each one of our family members are suffering from something or the other, correct? It can be as minor as acidity, gastric issues, or it can be as major as a fatty liver or diabetes or many more, right? And the second most important thing is building immunity. In this age of COVID, जहाँ पे हमने 2 साल देखा है how we have fought COVID, correct? Immunity is the most important thing here, and we are going to focus on that. All right? So what are we expecting out of this session? First is long-term health versus short-term health. Okay, we have always seen, or it's a general phenomena कि हम 2 महीने में क्या कर सकते हैं, हम वो उससे ज़्यादा interested रहते हैं, right? But when it comes to our health, we have to give a longer picture. जब हम 70-80 साल के हों, तब हम कैसे ठीक रह सकते? Second, the word diet. I personally hate this word diet, and हमारे organization में ये word ban है. We do not use the word diet because diet is nothing. What are we? We are a bunch of habits, right? There is no protocol कि हमें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, नहीं. जो हमारी health को upgrade कर सके, जो हमारी health को better बना सके, that is the thing that we should be having, not following any diet. What are the actual habits? This is a very important thing. We have seen so many of patients, ठीक है? कोई भी डिजीज हो उनको, चाहे वो गैस्ट्रिक इशू हो या फैटी लिवर हो या कैंसर हो, कोई भी इशू, इवन पीसीओडी और एनी स्ट्रेस, इफ यू गो बैक टू द रूट कॉज, इफ यू गो बैक टू अंडरस्टैंड कि उनको ये इशू कहाँ से आया है, तब आपको दिखेंगे कि कुछ हैबिट्स दैट दे हैव इनकलकेटेड ओवर द इयर्स दैट हैज गिवन राइज टू सच इश्यूज, करेक्ट? The habits that they have inculcated when they were 20s and they were 30s, that has inculcated into a disease now, which now they are suffering at their 40s and 50s. So what are we going to change in those habits so that hamari health better ho? Fourth most important thing is that how can we influence immunity?
इम्यूनिटी की सब बातें करते हैं कि ये बढ़ा सकता है, ये घटा सकता है, बट एट द कोर लेवल क्या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और क्या हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज आई एम सीइंग ऑल द attendees here are in the age bracket of 40 to 50 if I'm not wrong, right? And हमें ये ध्यान रखना है, we have to ensure that when we are 70-80 years old, how do we become medicine free? हमें कोई मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हमें नींद ठीक से आनी चाहिए. We should be able to do all our work without being dependent on any kind of medicines. And the last is 4 pillars of good health. This is a very crucial thing which I'm going to discuss, and it's going to change your perspective about health. So the concept that we work on, the concept that makes our system is nutrigenomics. It's a very simple term. Nutri means nutrition. Genomics means related to our genes. Whatever we eat, हम कुछ भी खाते हैं, वो हमारे genes को affect करता है. आज अगर इस सब सेशन के बाद वी ऑल गो आउट, मनीषा जी बता रही थी कि आपका प्लान है जाने का बाहर एज अ वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, राइट? जी जी जी. जाके जो भी खाएंगे वगैरह वो आपके बॉडी में जाकर क्या करता है, करेक्ट? या हम अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाके क्या करता है, दैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल टू नो एंड टू अंडरस्टैंड, टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर आवर हेल्थ. So broadly classifying diseases, there are 2 types of disease, acute and chronic. Okay, acute means more infection driven, जैसे कि पोलियो, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, बाहर का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है. And then we have chronic diseases which is more lifestyle driven. वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आता है, हमारी आदतों की वजह से आता है, as I mentioned earlier. So जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, जॉइंट पेन, इवन कैंसर. ऑल ऑफ दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज. और ये लाइफस्टाइल डिजीज क्यों है? क्योंकि ये हमारे बॉडी की में से ही आता है. देयर इज नो वायरस, देयर इज नो इन्फेक्शन अफेक्टिंग अस. हमारे बॉडी में कुछ रॉन्ग होता है एंड वो 10-15 साल जाकर ये सब डिजीजेस को जन्म देते हैं. और आज हमारा जो फोकस रहेगा वो क्रॉनिक इश्यूज में ही रहेगा. Okay. Now it's a very interesting fact which I want to ask all of you. What do you think? आज से 100 साल पहले acute diseases ज़्यादा थे या chronic? You can write it in the chat box. Which one do you think were more? Were there acute diseases or was there chronic diseases? I think acute. Correct. Acute. Nirmala ji acute. Ritu ji acute. Rishu ji acute. Sunita ji acute. Correct. All of you are correct because 100 साल पहले infection diseases ज़्यादा थे. We had more patients suffering from polio, dengue, malaria, all of that. But thanks to advancement of medicine, development of vaccinations, antibiotics, and अब ये infection diseases कम हो गए. Correct? But what has also increased is the rise of lifestyle issues. पहले हमारे घर में बैक पेन का, डायबिटीज का इशू नहीं होता था आज से 100 साल पहले. बट अब इफ यू सी 1 in every household is suffering from something or the other as a lifestyle issue. और ये राइज क्यों हुआ है? So when it comes to acute issues, it makes sense to be dependent on vaccination and antibiotics क्योंकि इन्फेक्शन बाहर से आया है हमारे बॉडी में. अगर इन्फेक्शन बाहर से है तो वी वुड नीड वैक्सीनेशन, वी वुड नीड एंटीबायोटिक्स कि वो हमारे इन्फेक्शन को खत्म कर सके. बट लाइफस्टाइल डिजीजेस में वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कि एक मेडिसिन लेने से आपकी हाई बीपी ठीक हो जाएगी या एक मेडिसिन लेने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, इज रॉन्ग. बिकॉज वो लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक नहीं करते. ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप देखेंगे कि हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं वो 10 साल से मेडिसिन ले रहे हैं बट उनका हाई बीपी तो ठीक नहीं होता है. उनकी सिर्फ डोसेज बढ़ती है, करेक्ट? या इफ somebody suffering from diabetes and they are taking pills to control their blood sugar level, only the dosage of those blood sugar pills keeps increasing. Does the issue go away? The issue does not. 10 साल पहले भी डायबिटीज था, 10 साल आज भी. इसका मतलब ये कि क्या वो रॉन्ग कर रहे थे? उनको जो एडवाइस किया गया पिल्स तो वो तो वही ले रहे हैं, करेक्ट? फिर भी वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है. तो ये क्यों नहीं होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
This is a statistics that we have taken. The death in India caused by acute issues पहले कितने थे? 10%. आज से 100 साल पहले. जैसे जैसे एडवांसमेंट इन मेडिसिन हुआ वो 10% कम होते गया. But what you can also see that कि the range of lifestyle disease के कारण जो deaths हो रहा है वो increasing हो रहा है up to a point that 67% of death in India is because of lifestyle issue. 60. So out of 100 people, 67 are dying because of heart disease, because of cancer, because of brain stroke or things like that. Correct? And this is a very big problem. Something which is happening in our own body and we are not able to treat it. Now, these are some common lifestyle statistics. Every 33 seconds, a person dies of heart attack. 3 out of 10 Indians have high cholesterol levels. Almost 40% have joint pain. 1 in 3 Indians have high blood pressure. 1 in 5 Indians have fatty liver. Child obesity has risen 100%. This is a very interesting case as child obesity. कुछ दिन पहले हमारे यहाँ like couple of months before हमारे यहाँ एक बच्चा आया था 17 साल का. His weight was 110 kgs. Okay. जब हमारी पूरे प्रोसेस में पहले हम जानते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है. तो जब हम उस बच्चे से पूछे कि आप क्या खाते हो तो वो बोलते हैं मैं दिन के 3 रेड बुल पीता हूँ. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि हमें एनर्जी मिलेगी तो मैं रेड बुल पीता हूँ. बट the fact is that Red Bull is nothing but sugar solution. Now that kid does not understand. That kid thinks that it is giving its energy, right? Which is responsible for his weight. 17 years old, weighing 110 kgs. This statistics was taken about 2017, 2018, but now I'm very sure that this statistics would have been 150%. Whatever products get marketed with, जैसे कि cornflakes. Another very interesting concept. Cornflakes हमें लगता है is a very interesting thing to have in the breakfast. But अगर आप cornflakes में देखें तो there is something known as high fructose corn syrup जिसके बिना cornflakes बनेगा नहीं. And that is extremely responsible for all the lifestyle issues. वो obesity promote करता है, heart disease promote करता है. बट हमें नहीं पता है. वो बोलते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स अच्छी चीज है ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, सो वी ब्लाइंडली ट्रस्ट दोज एडवर्टाइजमेंट एंड टेक कॉर्नफ्लेक्स इन द मॉर्निंग, व्हिच इज नॉट अ गुड आइडिया. करेक्ट? Lifestyle diseases are affecting 75% of the population. So what should we do? Now we know the problem. What should we do? So the only way to treat lifestyle issues is through lifestyle intervention, which means that we have to focus on the right food, we have to focus on right mindset, and we also have to focus on our physical well-being. All right. Now let us understand कि हम ये problem को address कैसे करेंगे. तो पहले हम खान पान को समझते हैं रूट से. So if you see, food can be divided into 3 categories: animal food, processed food, and plant-based food. Do you think is there any other categories that we have left out? Yes, no? Perfect. So apart from these 3 categories, what do you think is the best category? So between animal food, processed food, and plant-based food, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे ठीक कौन सा? I mean, everybody can participate, not just the women. Plant-based, correct, plant-based. Now, we all know that plant-based important है, but let us understand कि plant-based important क्यों है, all right? Now, if we understand the categories, animal food के अंदर आता है chicken, meat, dairy. Dairy मतलब milk and milk products because we procure it from an animal. All right. Processed food में आता है anything that comes under a packet. Okay. Cornflakes, bread, burger, chips, bhujiyas, जो हमें पैकेट में मिलता है, processed मिलता है, that is a processed food. And plant-based मतलब
fruits, vegetable, dal, chawal, all of that comes under plant-based. Now, scientifically proven, animal food and processed food increases the risk of heart disease. Animal food and processed food आपके heart issue को बढ़ाता है, आपके fatty liver को promote करता है, diabetes, hypertension, obesity, the list is endless. And plant-based food decreases or reverses chronic issues. This has been proved scientifically. Now let us understand plant-based में ऐसा क्या है, which is why it is reducing so much of risk. First is known as antioxidant. Do you know what are antioxidants? Yes, no. कभी सुना है antioxidants के बारे में? Antioxidants are something which improves the immunity of a person. Okay. Correct. Helps in fighting diseases, Rishuji, correct. Rituji, substance that inhibits oxidation, very true. Okay, so let me give you a very small example what are antioxidants. हमारे body में जो damage होता है, whether it's through lifestyle, whether it's through the sun rays, all right, उस damage को fight करने के लिए we need something known as antioxidants. Okay, now antioxidants किस में present है? Let us understand. So antioxidants is only and only present in plant-based food. Okay, not present in animal food, not present in processed food, only and only available in plant-based food. So things that can help to reduce the damage in our body is present in plant-based food. Then we have fiber. Okay, now fiber is a very important thing that keeps us healthy from inside. अब अगर देखें वो भी सिर्फ plant-based food में ही पाया जाता है. So two most important things to reduce the risk of lifestyle issues is present in plant-based food, which is antioxidants and fiber. Okay, any questions so far? अगर आपको कोई भी questions हो, आप please feel free to put it in your chat box. I'll answer it there. Okay. Now, if you can see, this is the human body, and the picture that is shown in between, that is known as the gut. The large intestine and the small intestine is the gut of our body. Now, 85%, we spoke about immunity. Everybody speaks about immunity. Ye khana chahiye, wo khana chahiye. But 85% of our immunity lies in our gut. Okay, so हम जो खाते हैं, हम जो, you know, whatever we intake as food, right, is responsible for providing us immunity. And gut को healthy रखने के लिए gut bacteria. So there is a gut के अंदर ऐसे करोड़ों cells है, right? करोड़ों bacteria है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए responsible है. And उन bacteria का खाना होता है fiber. Okay, so the gut bacteria, the food of our gut bacteria is fiber. Now, food can be divided into two broad categories, macronutrients and micronutrients. Macro meaning protein, carbs, and fat, and micro meaning minerals and vitamins, and there is a third category known as phytonutrients. You know, 95% of doctors and dietitians focuses on macronutrients. Protein, carbs, fat. हमें कितना protein खाना चाहिए, हमें कितना fat खाना चाहिए, हमें कितना carbs खाना चाहिए. But there are only very little percentage of doctors and dietitians that focuses on micronutrients, कि हमारे body में कितना minerals, कितना vitamins, कितना phytonutrients हमारे खाने पीने की वजह से जा रहा है. Now, what are phytonutrients? This is a very important category because phytonutrients में वो power होती है जो हमारे BP को ठीक कर सकता है, हमारे diabetes को ठीक कर सकता है. Okay, so phytonutrients are nothing but colorful compounds. I'm sure जब भी आप कोई सब्जी मार्केट में जाते हैं, you would see, you know, red, yellow, green capsicum, correct? या garlic is white in color, right? Or mango is yellow in color. ये कलर्स कहाँ से आते हैं? These are naturally occurring colors जो उनको naturally मिलता है, plant से ही मिलता है.
Now these colorful compounds are known as phytonutrients. Okay, and each color is responsible for a certain function in your body. So the green color promotes healthy lungs, the red color promotes healthy heart, the purple color promotes cognitive health. तो पर्पल में क्या आ जाएगा आपका, ये जामुन होता है, आएंगे अभी सीजन में 2-3 महीने बाद, जामुन is purple in color, correct? Then you have yellow boost immunity, so orange, mango, all of that, very good for immunity. And then bone health is promoted by white, so white sesame seeds, right? Now let us understand few statistics. 74% do not eat enough red. Now what is this? This is trying to understand कि हमारे रोज के खान पान में हम कितने colors include करते हैं. 69% do not eat enough green. 83% do not eat enough white. White में क्या आ गया आपका, onion, garlic, pear, cauliflower. 80% do not eat enough yellow or orange. And 76% do not eat enough purple or blue. हर एक कलर के अपने benefits होते हैं and हर एक कलर हमारे डाइट में include करना बहुत ही important होता है. Now, this is an extremely important concept. I want all of you to please pay attention to this. कोई भी दिक्कत हो, please पूछेगा. There is something known as the pH scale. Okay. Now, 0 to 14 is the pH scale. All right. Now, 0 to 14 is the pH scale. 7 is neutral. So, 7 बीच में होता है. 7 is neutral. 0 to 6 is acidic. And 8 to 14 is alkaline. Understood? So we have a pH scale 0 to 14, 7 is neutral. So pani is neutral. Pani ka pH 7 hota hai, it is neutral. 0 to 6 is acidic and 8 to 14 is alkaline. Blood ka pH is 7.2 to 7.3, which is slightly on the alkaline side. So body is naturally trying to stay on the alkaline side. Okay, now let us understand हमारे जो common food items होते हैं, okay, वो कहाँ पे category में fall करते हैं. Milk, which is a very common thing in our diet, falls, उनका pH fall करता है between 5 to 6, which means that it is acidic in nature. You know, milk काफी emotional है हमारे culture में. It is not just food, it's a cultural belief कि milk हमें बहुत प्रोटीन देता है, हमें बहुत कैल्शियम देता है. बट अगर आप पीएच स्केल के हिसाब से देखें, इट फॉल्स अंडर एसिडिक एंड मिल्क अंदर जाकर एसिडिटी क्रिएट करता है. हमारे पास हर हफ्ते 20-25 पेशेंट आते हैं जो हमें बोलते हैं कि उनको एसिडिटी गैस्ट्रिक इश्यू होता है. द मोमेंट वी रिमूव मिल्क आउट ऑफ द सिस्टम, 50% ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इज सॉर्टेड. Cold drink, one of the worst foods of the planet, highly acidic, falling between 2 to 3, highly acidic. Now, जैसे कि आज मनीषा जी का ने प्लान बनाया है सबको मूवी लेकर जाने के लिए, तो वहां पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डे टू डे कोल्ड ड्रिंक लेना is not a good idea at all. It will just promote more acidic environment. And जैसे ही more acidic environment produce होता है, diseases आने लगते हैं. No disease can survive in an alkaline environment, and this has also been proven. Now, fruits and vegetables, how do they fall? So, you know, vegetables like carrot, broccoli, all of that falls on the alkaline side. So we know that plant-based food are naturally alkaline, and they promote the same in our body. Now, this is a very interesting concept again. So, intermittent fasting. I want to ask all of you, जब भी हमें बुखार होती है, ठीक है? जब भी हमें बुखार होती है, हमें भूख कम लगता है या ज़्यादा? You can write it in the chat box. So, do we feel more hungry or do we feel less? Yes. शोभा जी लेस, ऊना जी ने बोला है लेस, मनीषा जी लेस, करेक्ट. सो इफ यू कैन सी दैट ऋषु जी बोल रहे लेस, करेक्ट. सो इफ यू सी, जब हमें बुखार होता है हमारा भूख कम हो जाता है, ये क्यों होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. हमारी बॉडी की जो एनर्जी है
that is primarily involved in two things. This is very important. If you're not able to understand, please ask me. हमारे body की energy is primarily involved in two things. Okay, one is digestion. हम कुछ खाते हैं तो उसको digest करना उसमें, and second is repair, cleaning the system. All right, so either our energy is being used in digestion or in cleaning the system. Interesting fact ये है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, बॉडी अंडरस्टैंड्स कि बाहर का इन्फेक्शन है, वी हैव टू फाइट इट. हेंस हमारा डाइजेशन को नीचे किया जाता है, एनर्जी और डाइजेशन, एंड ऑटोमेटिकली वी फील लेस हंग्री बिकॉज बॉडी इज फोकसिंग ऑन क्लीनिंग द सिस्टम. बॉडी इज स्मार्ट, उनको पता है कि अभी क्लीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. हेंस आवर डाइजेशन, आवर फीलिंग ऑफ eating something goes down. Okay, and our cleaning goes. Cleaning क्यों necessary है? क्योंकि infection को बाहर निकालना है. Got it? Now this is what intermittent fasting is based on. Whenever we are hungry, whenever we are fasting, all right, whenever we are fasting, whenever we are not eating anything, we are not consuming anything, our body focuses on cleaning. And जितना important है सही चीज खाना, उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने शरीर को टाइम देना कि वो अपने आप को क्लीन कर सके. Each and every part of our body needs cleaning and our body needs time to clean. But if we are constantly eating, अगर आप हमारा डाइट देखेंगे, you will find that we are constantly eating. हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद लंच खाते हैं, फिर शाम को कुछ खाते हैं, फिर डिनर खाते हैं. डिनर के बाद अगर हम जगह हुए रहते हैं तो अगेन वी ईट समथिंग. पूरा दिन हमारा बॉडी सिर्फ डाइजेशन करने में ही जाता है. It is not allowing time to clean itself, and that's when diseases come into the picture. Now, what are the benefits of fasting? So fasting, intermittent fasting is a very popular thing, but a lot of people are unaware कि इसको कैसे करना चाहिए. तो the best way जो हम अपने हर patient को recommend करते हैं, so intermittent fasting is compulsory to all our patients. And the best way to do it is give a gap of minimum 12 hours, which is basic. अगर आप रात को डिनर 8 बजे करते हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी 8 बजे ही होना चाहिए. That 8 p.m. to 8 a.m. is your fasting time. And this basic 12 hours of fasting is going to drastically improve your health. बहुत जन और extend कर सकते हैं time, they can do 14 hours, they can do 16 hours, but 12 hours of fasting is very crucial for your health. What are the benefits of fasting? You'd reduce weight. A lot of people reduce weight by just fasting 12 to 14 hours. सिर्फ 12 to 14 hours आपको कुछ नहीं खाना है, and उसमें lot of people lose weight, their brain functions improve, inflammation goes down, blood sugar control. So आपका जो blood sugar levels है वो control में आता है. It helps to increase your longevity, and this has been proven. There was a Nobel Prize winner just 2-3 years back जिन्होंने ये बताया है that body functions better if you give body the time to fast. Now let us understand कि what are the best foods and the worst foods. So the best foods for a healthy living is green leafy vegetables जो अभी winter में काफी available होते हैं, right? So we have to focus on green leafy vegetables, cruciferous vegetables like broccoli, cauliflower, cabbage. Onion, beans, garlic, and drumstick should be a must in your diet every day. Fruits में pomegranate and papaya are excellent for health and disease reversing benefits. Nuts and seeds, I'm sure आप लोग ने बहुत सारे seeds के नाम सुने होंगे like chia seeds और pumpkin seeds और flax seeds, अलसी के बीज जो काफी common है हमारे diet में. You should have a point to include them. And what is the worst food? Red meat, मैदा. मैदा में जितने भी processed item आते हैं उन सब में मैदा होता है. And मैदा हमारे बॉडी में जाकर सिर्फ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है. Packaged food and drinks, soda, white sugar is very detrimental to health, and fried food, तला भुना कुछ भी. Now immune system की जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जितना भी समझा है, whether it's intermittent fasting, whether it's phytonutrients, whether it's sticking to plant-based food, all of this promotes better health.
Now, what are the things that reduces, that weakens our immune system? Stress. I cannot emphasize enough on this, how stress is detrimental to health. Stress हमारे immune system को weak ही नहीं करता है, but हमारे सारे body functions को भी बिगाड़ता है. Okay? अगर for example कल FIEO में, हमारे जोनल हेड में देयर इज अ मीटिंग एंड सबको टेंशन है कि मीटिंग कैसी जाएगी या प्रेजेंटेशन कैसा जाएगा, वो स्ट्रेस इज ओके. बट कोई चीज के बारे में लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कि आप 1 महीना 2 महीना उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, उससे सर्टेन हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन योर बॉडी व्हिच स्टार्ट्स डिस्ट्रक्टिंग योर इम्यून सिस्टम. It makes you more prone to infections. It makes you more prone to diseases. Sedentary lifestyle, sitting is the next movement. This is very important because अभी के lifestyle में क्या होता है, हम ऑफिस जाते हैं सुबह, वहाँ पे we sit in our cabins, we sit in front of our desk for 7-8 hours and then we go back home. There is no time that we move around, which is not okay. Food and nutrition like junk food, packet food, deep fried. Lack of quality sleep. This is extremely crucial. अगर आपको quality sleep नहीं आ रही है, that is a very big problem. And अगर इस पूरे meeting में किसी को भी sleep के issue है, definitely I will cover that after this presentation is over. And smoking. This goes without saying, smoking definitely is very detrimental to health and it also promotes cancer. Now, इतना सब कुछ सुनने के बाद, what are the basic do's and don't, right? We know the concept, we know क्या हमारे लिए अच्छा है, now we understand क्या हमारे लिए खराब है, but what should we do on a day-to-day basis? Fruits, variety, seasonal and empty stomach. This is a ground rule. Always begin your day with fruits because अगर आप देखें, you are fasting. अगर आपने dinner 8 या 9 बजे किया है, the next day when you get up and eat your first meal, okay, आपका बॉडी मिनिमम 10 से 11 घंटे फास्टेड स्टेट में है, राइट? तो क्लीनिंग अच्छी हो रही है. तो सुबह आप जो खाना देंगे दैट शुड प्रोवाइड एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड वो फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है. तो फोकस ऑन वैरायटी, जो भी सीजनल वेजिटेबल फ्रूट्स हो. ग्रीन वेजिटेबल्स इज अ मस्ट. ऑलवेज इंक्लूड 2 to 3 ग्रीन वेजिटेबल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस. वो आप सैलड के फॉर्म में ले सकते हैं या आप कोई सब्जी बना रहे हो उसके फॉर्म में ले सकते हैं, बट इंश्योर कीजिए आप ओवर कुकिंग ना करें. गैजेट्स एंड मील्स, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. हमारी आजकल ये हैबिट डेवलप हो गई है कि हम फोन पे देखते देखते खाना खाते या टीवी पे देखते देखते खाना खाते. इट इज नॉट ओके. आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर डाइजेशन. अगर ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा कि आप कुछ खा रहे हैं, वो डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा. तो अगर आप कुछ अच्छा भी खा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा. सो ऑलवेज पुट योर फोन डाउन, ऑलवेज पुट योर लैपटॉप डाउन. डू नॉट ईट व्हाइल वॉचिंग. ईट एंड बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर मील. डेयरी, मैदा, प्रोसेस्ड फूड एंड ड्रिंक्स, मिनिमल कंजम्पशन. And 30 minutes of exercise of your choice. आप योगा करना चाहते हैं आप योगा करिए, आप वॉक करना चाहते हैं आप वॉक करिए. Many people dance, many people go to Zumba, completely your call. But 30 minutes of exercise, 30 minutes of movement releases certain hormones in your body which ensures कि आपका better function. These are 5 basic do and don'ts. अगर आप ये करेंगे, you will be able to improve your health by 60-70%. Now, this is a very important slide जो मैं starting में बात कर रही थी. This is the crux of your health. This makes your health or breaks your health. So, 4 pillars of good health. There are 4 pillars, okay, जिसके ऊपर हमारी सेहत टिकी है. The first is food and nutrition. तो आप कैसा खान पान करते हैं, कितना प्रोसेस्ड खाते हैं, कितना फ्रूट्स खाते हैं, कितना वेजिटेबल्स खाते हैं, they contribute to your health. Physical movement, आप कितना वॉक कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं. You don't even have to do it daily. I understand सबके बिजी शेड्यूल होते हैं, बट एटलीस्ट वीक में 3 से 4 दिन निकालिए जहां पे आप आधी घंटा डेडिकेट करें फॉर फिजिकल एक्टिविटी. क्वालिटी स्लीप, वी कैन नॉट एम्फसाइज. जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन कम करते हैं ताकि बॉडी क्लीन हो सके,
Sleep is like fasting for brain. जब हम सोते हैं हमारा brain, right, it reduces the toxins from the body. It ensures कि कल जब हम सुबह उठे तो हम clearly सोच सके, हम better काम कर सके, और उसके लिए sleep is very crucial. Lot of people come to us, they are not able to sleep, या वो 3-4 बार उठते हैं अपने नींद के बीच में, या उनको quality sleep नहीं आ रही. Absolutely not okay. अगर आपको ये हो रहा है, definitely if you are facing from this, you can ask me, I can give you solutions for that. But it is not okay to stay with improper sleep, because more and more, if you get improper sleep, more and more toxins get accumulated, जो आपको disease को promote करेगा. And most importantly, emotional well-being. You know, आजकल everybody is speaking about, you know, being positive. Everybody is speaking about having positive emotions. But, you know, very few people know that it's our mind that can help us reverse issues. हमने कितने patients को देखा है that they recover 50% better, 60% faster, even cancer, if they are thinking and feeling that they are improving. अगर हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहेंगे कि हमें बीमारी हो गई है, हम ठीक नहीं हो सकते, तो बॉडी भी ट्राई नहीं मारता कि वो बेटर हो. ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड. आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज पुट इट इन योर चैट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर. गार्गी, ये आपने जो एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें प्रोसेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड फूड की जो स्लाइड थी, जो वो 3 कैटेगराइजेशन है, सो उसमें जैसे वी ऑल नो दैट न्यूट्रिएंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो पर्टिकुलरली जैसे वी ऑल गो टू जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स, तो वहां पे हमको ये बोला जाता है कि वी नीड टू एग्जामिन आवर विटामिन डी एंड B12 लेवल्स. करेक्ट. time to time, but as I have also learned that particularly if I talk about vitamin B12, vitamin B12 is not found in plant sources, right? Okay. So उसमें वहाँ पे एक lack आ जाता है, because if you have absence of vitamin B12 or deficiency of vitamin B12 in your body, so that limits you to do exercises. Weightlifting, and so what is the best way out, because in that case we have to maybe take the tablets or the medicines, vitamin B12 supplements, or elsewhere it is found in animal foods, because they say you go for non-veg, but since majority of the population, or particularly if I talk about women, they are vegetarians. So any solution for that? Definitely. So इसमें 2 चीज बोलना चाहूंगी मनीषा जी. पहली चीज ये है कि let's just understand this habit of ours. ठीक है, अगर हमें particular कोई compound या particular कोई element नहीं मिल पा रहा है हमारे डाइट की वजह से, okay, that should not be a reflex to include things that promote diseases in us. ओके, करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप इफ यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज दैट इज प्रमोटिंग डिजीज इन योर बॉडी, राइट, यू आर स्टिल इन द सेम प्लेस. आप भले ही सुबह से शाम अच्छा खा रहे हो, राइट, बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली एडिंग एलिमेंट्स दैट इज क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन इनसाइड योर बॉडी, दैट इज मेकिंग योर सिस्टम गो वीकर, करेक्ट, इट विल जस्ट प्रमोट अदर डिजीज. ओके, पहली चीज. दूसरी चीज, विटामिन B12 is fresh. So विटामिन B12 आप देखेंगे यूजुअली डेयरी में अवेलेबल होता है, बट वी नो दैट डेयरी इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी, क्योंकि वो अंदर जाके एसिडिटी प्रमोट करते हैं. डेयरी की उनको कैल्शियम मिलता है, बट डेयरी से कैल्शियम नहीं मिलता है. मुझे there's a thing that we suggest to all of our patients जो यहाँ पे, so I'm from Calcutta, Bengal. यहाँ का एक staple dish है known as पांता भात. So the staple name is पांता भात, otherwise known as fermented rice. It's a very simple thing. You have to take 2-3 spoons of cooked rice, जो चावल हम खाते हैं, okay, 2-3 spoons of cooked rice, and उसको 1 glass पानी में आप soak करके रख दीजिए.
Okay, when you soak it overnight, you have it next day first thing in the morning, right? With the water and the rice. Now there are two things very important here. First, it's an excellent probiotic जो आपके gut health को ठीक करता है, gastric issues, acidity issues better करता है. And second, this is a very rich source of vitamin B12. Okay, so you do not have to depend. A lot of patients who come to us, they say that we would like a natural way. Some people are like, मुझे पांदा भात नहीं करना है, मुझे supplements लेने. So you can go supplements. But if you want a natural way, a probiotic also to get vitamin B12, this is an excellent B12 solution, and you can include this. Irrespective, आपको कोई भी बीमारी हो, आप पांदा भात include कर सकते हैं अपने diet में. Okay, thank you, thank you. We have other questions also as well on the chat box. Yeah, so I'll just take that. So Tarak ji ने पूछा है, please suggest a lifestyle habit to be followed by all 40 to 60 years of age. I mean, अगर इनसे कोई below भी है तो भी follow कर लीजिएगा या above भी हो. But जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक slide में, if you see this, you know, 40 to 60 years of age is a very crucial age. उसी टाइम पे हम अपनी हेल्थ बना सकते हैं ताकि हमें 70-80 साल में जॉइंट पेन नहीं हो, डायबिटीज नहीं हो, बीपी इश्यूज नहीं हो, विजन लॉस नहीं हो, जो आफ्टर 10-20 years आता ही है. So please focus on things like including seasonal vegetables. ठीक है, seasonal fruits and vegetables बहुत ही important होते हैं. And always start your day. You know, हमारी habit है, मतलब इंडिया में एक कल्चर है, you know, सुबह उठ के चाय पीना है. चाय बिस्किट के बगैर तो दिन शुरू होता ही नहीं है. हम बहुत सारे पेशेंट से सुनते हैं ये, बट ऐसा नहीं है. यू नो, चाय बिस्किट आपके बॉडी में जाकर सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरे बॉडी को ना एसिडिक बनाता है. हमने वो स्केल समझा था ना, अल्कलाइन और एसिडिक का, राइट? सो चाय अगेन गोज इनसाइड योर बॉडी, इट इज नॉट गुड. वो गट बैक्टीरिया को इरिटेट करता है, गट हेल्थ को ठीक नहीं करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अंदर जाके कुछ अच्छा भी नहीं करता है, राइट? आज हम कोई भी खाना खाएं, they have to focus on two things, right? Either they can do bad or it can do good, correct? तो हमें वही चीज खानी जो अंदर जाके ठीक करे हमें, ना कि बिगाड़े चीजों को. एंड चाय बिस्किट अंदर जाके डेफिनेटली बिगाड़ता है. सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे इज ऑलवेज फ्रूट्स एंड फोकस ऑन सीजनल. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल कम टू अस, हम डायबिटिक हैं, हम मैंगो नहीं खा सकते हैं, राइट? या हम चावल नहीं खा सकते. ऐसा नहीं होता. It's not the fruits and vegetables that decide your disease. It is the disease that should be reversed. So start your day with fruits, Tarak ji, very important. Always include green vegetables. Okay? And most importantly, जितना important है सही खाना, उतना important है ये भी जो गलत चीज है उनको stop करना. So dairy, processed food, drinks, cold drinks or hard drinks, whatever it is, we have to reduce that as well. Okay? And physical, आप 30 minutes of walk. अगर आप कोई कॉल पे, अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, that you can allot time in the morning, you go for an evening walk. You know, dinner के आधी घंटा बाद या 45 minutes बाद you're going out for a walk, 15 to 20 minutes walk. It's so beneficial. और अगर आप ये 3-4 चीज बेसिक चीज करेंगे, you will see that within 1 month, you know, that extra weight is going down. Your sleep is getting better. You feel lighter, better from inside. And those who have the habit of starting their day, you know, with tea, coffee, all of that, there is a herbal concoction that I would suggest to all of you. So बहुत ही basic है, I'm sure ये सबके kitchen में भी available होगा. जीरा, तुलसी and पुदीना. Okay, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 पुदीना का पत्ता and 4 से 5 तुलसी का पत्ता. You boil it in 1 glass of water and you strain and have it. That is an excellent way of starting your day. वो आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बीपी को लो करता है, आपके ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करता है, पूरे सिस्टम को बेटर करता है. So those who have the habit of drinking tea and coffee in the morning, I would recommend them shift them to this herbal concoction because वो उनको better करेगा every single day. Okay. So there is this, Una ji ने पूछा है, how is black coffee as a morning drink? Black coffee, Una ji, will just go inside your body and promote acidity और कुछ नहीं. And also black coffee will harm your sleeping patterns.
जो अभी रियलाइज नहीं होगा, but 4 to 5 months of consumption of black coffee will automatically start harming your sleeping patterns. And अगर आपको ठीक से sleep नहीं आएगा, body को time नहीं मिलेगा अपने आप को ठीक करने. How to deal with disturbing sleep during pregnancy period? I would recommend if you can write a little about your issue to our email ID, which is health@reversefactor.in. आप उसमें लिख दीजिए. Our team will definitely get back with understanding, because इसके लिए थोड़ा सा details जानना पड़ेगा that what can be recommended to you. Preeti ji, but black tea is healthy. Ma'am, tea and coffee is never healthy. They just go inside your body and promotes acidity. Okay, for sleep, lavender and chamomile. Excellent, yes. Preeti ji, well said. Lavender and chamomile tea. In fact, जिनको sleep की problem है, okay, अगर आपको improper sleep आते हैं, I'll suggest 3 things that can help you in improving your sleep. Okay, first is definitely chamomile tea. Okay, so chamomile tea आपको बाजार में locally भी मिल जाएगा, online भी मिल जाएगा. One, in the evening, take 1 cup of chamomile tea. This is going to improve your sleep a lot better, क्योंकि धीरे धीरे, you know, sleeping hormones will be reduced, I mean increased, and automatically you will get a time, you know, आपको 10 बजे 11 बजे proper नींद आने लग रही है. Second most important thing is that left nostril breathing. It's very simple. इसमें क्या करना है, आपको अपना index finger right nostril पे रखना है, and you just have to breathe in and breathe out from your left nostril. What does this do? When you breathe in and breathe out from your left nostril, you are activating the parasympathetic nervous system, which is responsible for sleep. Okay? And the third thing that you can do is something known as jaifal. Nutmeg बोलते हैं English में. अगर किसी को sleeping issue है, तो शाम के fruits के साथ, okay, evening में between 4 to 5, with the fruits, any seasonal fruit, let's say apple आप ले रहे हैं, ठीक है, तो 1/4 teaspoon of jaifal, 1/4 teaspoon of jaifal, you just have to sprinkle it on your fruits and you have it. Within 1-2 weeks, you will start seeing that your sleep is getting better. The results are never going to be instant, but idea यही है कि 2-3 हफ्ते में आपकी sleeping patterns improve हो, your sleeping hormones are released at the right time, and you get a sound sleep. So जब आप sleep से उठे, you should feel refreshed. Okay. सुनीता जी, मैंने अभी जो 3 चीज डिस्कस किया है, आप definitely include कर सकते हैं for sleep. I'm sure that it should improve your sleep. Yes, thank you. I have oils too for the same. Okay. किसी ने पूछा है, please provide us good nutrition advice on menopause. Okay. Now menopause, a lot of patients come to us with menopause here. Now menopause में क्या होता है? There is a little hormonal, ठीक है, imbalance that goes on. Okay. What we have to understand that we do not have to take food that promotes hormonal imbalance. Okay, which meaning that foods like dairy, foods like processed food, they promote hormonal imbalance, and this is important to every woman. If you're going through menopause, please reduce the consumption of your dairy items. Please reduce the consumption of your processed items, because वो hormonal imbalance को बढ़ाते हैं. Okay, and most importantly, there is one thing that you can do, is that there is something known as coriander seeds. गोटा धनिया बोलते हैं, ठीक है? 2 teaspoons of coriander seeds soaked in 1 glass of water. 2 teaspoons of coriander seeds soaked in 1 glass of water. Overnight, just strain it in the morning and drink the water. Just the water. This is going to be a great thing to introduce when you are going through menopause. Okay, somebody is asking that what about green teas for longer days? Yes, of course. Green tea is obviously a better alternative to tea and coffee, especially milk tea and milk coffee. But अगर जैसे मैंने वो जो herbal concoction बताया, जीरा तुलसी पुदीना, right?
if you can prepare that and have it. I'm sure electric kettles are available everywhere now, right? Just carry these ingredients. If you are a working woman, you can carry these ingredients and just boil it and drink it. This is a much better alternative to green tea, because green tea के फायदे इतने से होंगे, but वो जीरा तुलसी पुदीना के फायदे इतने होते हैं, right? वो आपके इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है, आपके सिस्टम को बेटर करता है. तुलसी improves your immunity, and the list is endless. So if you can have jeera tulsi pudina concoction, definitely you go for that. गार्गी, जो ग्रीन टी की आपने बात बोली, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कैफीन जो कंटेंट होता है वो तो ग्रीन टी में भी होता है ना? Caffeine content, correct. Caffeine content green tea में होता है. That is why we suggest a better alternative. See, green tea is an alternative जब आप एक herbal concoction नहीं बता सकते. You are traveling, right? That time you cannot prepare a herbal concoction. तब आप जीरा तुलसी पुदीना boil नहीं कर सकते, right? Right. के लिए you can definitely go for green tea, and आजकल उसके flavors भी आते हैं. But if given an option where you have your own pantry, right, or you have the access of making a hot brewing cup of jeera tulsi pudina, definitely go for that. Even green tea ke excess is not good for health, so we never recommend green tea. So green tea tabhi it's a good alternative to black coffee, black tea, or milk coffee, milk tea. But if you have an option, always go for a herbal concoction. Okay, thank you. I hope this is all. In case if anybody has any more questions, please feel free to write us in this email ID. And I hope this was useful to each one of you, especially to all the women. This was very, very useful. Yes, Nimla ma'am. So I was saying, I mean, it's a wonderful presentation. You've explained everything so in a nutshell, but you've explained each and everything. I hope that we can follow your the tips that you've given us. These are very simple things which we can do. I mean, sabji is available here in the kitchen. The only thing is, I mean, we need that motivation to just go and do, what we have to. So thank you so much, Gargi, for this wonderful presentation. Thank you so much, Nirmala ji, for inviting me. And I really hope that each one of you take away at least something from today and start including in your diet, because, it's all that step matters, each one of that step, right? Every step that we take, either it can improve our health or it can do the opposite, right? And we should always focus on improving our health, always. Especially to all the women, I'm telling you, you guys are the backbone of your families, right? So it's very important for you to take care of your health. So please ensure that you take out some time to ensure that you are taking the right step towards your health. Yes. Thank you so much. Thank you so much. मुझे एक बार पांता भार की रेसिपी दोबारा से बता सकते हैं प्लीज? हाँ जी बिल्कुल. तो कुक्ड राइस होता है ना सुनीता जी, कुक्ड राइस जो चावल हम खाते हैं, ठीक है, वो 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में आप भिजा कर रखिए, ठीक है, पूरी रात भिजा कर रखिए, एंड सुबह पानी के साथ वो चावल भी ले लीजिए, ठीक है, और कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट कुक्ड राइस एंड वाटर. Thank you. Thank you. In fact, it's good for skin as well. Yes, absolutely. Any probiotic is excellent for skin. So probiotics, again, very important, Preeti ji. वो skin के लिए अच्छा है क्योंकि वो gut के लिए अच्छा है. Yeah, exactly. So gut, if the gut is healthy, you will have less number of diseases and you will definitely, वो skin पे दिखता है. अगर आप gut ठीक होगा तो definitely वो skin पे दिखेगा. अगर हम वो चीज खाएंगे जो gut को irritate करेगा तो वो skin पे भी आएगा. Hello, I'm Gargi. हाँ जी बोलिए. This is to be taken empty stomach or this rice? हाँ, definitely empty stomach in the morning. Panta bhat is supposed to be taken empty stomach in the morning. Okay, thanks. So thank you, Ms. Gargi, for delivering such a wonderful presentation, and we really learned a lot from this. And I hope with all these suggestions like intermittent fasting and the knowledge of acidity, alkalinity that you have just provided, we will just incorporate that into our lifestyles. So thank you so much. And my
My special thanks to my male colleagues who have who took out the time and they have attended the session. Thank you so much, sir. Srinath sir, Mohit, Vineet, Rajesh sir. Thank you each one of you who have attended the session and made it a grand success. Thank you so much. And I think we should close the session now, ma'am. Nimla ma'am. Yeah. Thank you everyone. To everybody. Thank you, Manisha. Wish you all a very happy National Women Day and get ready for the lunch. Go and get out. Thank you. Thank you for your feedback and your address, Mohit. Thank you so much. Thank you, and wish you all good luck for the journey. Yeah. Thank you. Thank you. Okay.